Good evening, everyone. I'm Rahul Sharma, your host and host for this entire session. In this session, we'll discuss CUET most expected questions of continuity and differentiability. Am I audible? Okay, students. So let's start with the question part. जैसे मैंने आपको बताया, in today's session we'll discuss few concepts of continuity and differentiability. Then we'll further move to the question part. So let's start with the concept. Continuity. आप किसी भी एक फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कब बोलते हैं, या फिर हम बोले किसी भी फंक्शन की हम कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं. फर्दर इन प्रीवियस सेक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द लिमिट पार्ट ऑफ अ फंक्शन, हाउ टू चेक वेदर द लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट और नॉट. उसी के फर्दर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज आवर कॉन्टिन्यूटी. सपोज आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, देयर इज अ फंक्शन f of x. We need to check in a certain interval, let us suppose the interval is a to b, whether the function is continuous or not. Suppose this is our a point, it's our b. a and b के बीच में आपको चेक करना है whether the function is continuous or not. It means आपको देखना है a से b के बीच में फंक्शन का जो कर्व है, ग्राफ है, क्या वो continuous है, कहीं पर ब्रेक तो नहीं हो रहा. And for example, in this function we'll find this curve is continuous. यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं है, right? Suppose if there is a function like this and it's a to b. Now we need to check whether this curve is continuous or not in the interval a and b. Now we can see at this point, let us suppose this point is c, which is lying between a and b. यहाँ पे आप देखेंगे फंक्शन ब्रेक हो रखा है, बेसिकली कर्व ब्रेक हो रखा है. इट मींस जो इसका ग्राफ है ये कॉन्टिन्यूस नहीं है. इन दैट केस वी विल से यस द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट, लेट अस सपोज c. So this is how we can check whether the function is continuous or not graphically. But if we talk about the theory part, then we need to check the limit and the value of the function at that point. Let me explain. Let us suppose there is a function f of x. We need to check whether this function is continuous or not at a point a. In that case, first of all, we need to check whether its limit exists or not. Limit exist करेगी या नहीं करेगी. So for that we need to find the left hand limit, which is limit x tends to a minus f of x. Left hand side से अगर हम approach करते हैं, in that case, after that right hand limit, which is limit x tends to a plus f of x. Now further the value of the function at that point, that is f of a. If all these three things are equal, that is left hand limit is equals to right hand limit, that is limit exists, and that limit is also equals to value of the function at that point. In that case we'll say yes, function is continuous at x equals to a. So for a point a, if we need to check whether the function is continuous or not, in that case first of all we need to find the limit. And how can we check whether the function has limit? It means we need to focus on the limit, left hand limit and right hand limit. First of all we need to find the left hand limit, and after that right hand limit. If both exist, in that case then we need to check the value of f of a. अगर तीनों आपस में equal होंगे, then we'll say the function is continuous at x equals to a. Okay, now let's move to properties of continuous function. There are few properties of continuous function. Properties of continuous function. Okay, if there are two functions, let us suppose f of x and g of x, and both are continuous. If two functions are continuous at a point, in that case we can say that yes, their addition is also continuous, that is f of x plus g of x is also continuous. Similarly, if two functions are continuous, in that case their difference, that is subtraction, is also continuous at that point. Okay, now let's move to our third point. If a function is continuous and we are multiplying the function by a constant number or by a scalar, then also the function is continuous. For example, if we talk about sin x,
graph of sin x is something like this, which is continuous. Now, if we need to check whether 5 into sin x is continuous or not, this is a function which is continuous and we are multiplying this function by constant number. In that case, yes, we'll say, yes, this function is also continuous. Means functions multiplied by constant number are also continuous function. Similarly, if two functions are continuous, then product are also continuous, like x square is continuous, cos x is continuous. In that case, x square into cos x is also continuous. Similarly, with the divisibility part, if two functions are continuous, then their division is also continuous. Condition applied. जो denominator वाला part है वो 0 नहीं होना चाहिए, because we know that a finite value like 1 by 0 is not defined, that is indeterminate. Basically infinite पे, indeterminate नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे infinite पे approach करता है. So this is all about the properties of continuity. Now let's move further on differentiability part. For differentiability also we need to check left hand derivative and right hand derivative. There are two things, right hand derivative and left hand derivative. If both the things are equal to one another, then in case we'll say yes, the function is differentiable. ये आपकी class 12th में topic है in chapter number 5, continuity and differentiability, which is very important for CUT, domain, and also for IM part. Yeah. So for right hand derivative again, in this case, we need to approach from right hand side. So it's right hand derivative. In differentiation, f dash of x dash represent differentiability, means differentiation of a function. So at a point A, f dash, that is right hand derivative. A plus means positive side से जब approach करेंगे, in that case right hand derivative is this, that is limit s tends to 0, f of a plus h minus f of a divided by h, where h is the smallest positive number. ये सब मैंने limits में आपको पहले ही cover कराया हुआ है. Similarly, for left hand derivative, it means in that case we need to approach the function from left hand side, f dash a minus. In that case, we need to check limit s tends to 0, f of a minus h minus f of a by minus h. Right? मैं थोड़ा सा आपको अप्रोच देता हूं कि ये सब है क्या बच्चों. डिफरेंशिएशन जो आप dy by dx निकालते हो ऑफ अ फंक्शन, डिफरेंशिएशन बेसिकली होता क्या, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग. बेसिकली कितनी रेट से कोई चीज चेंज हो रही है. Can be written like del y by del x, means change in y with respect to change in x, such that del x tends to 0. बहुत छोटे चेंज को रिप्रेजेंट करता है हमारा डिफरेंशिएशन. Suppose there is a point x. At that point, value of the function is f of x. Similarly, if there is a point x plus h, means थोड़ा सा मैंने increment किया उस value में. In that case, the value of the function become f of x plus h. So change in y means this value of this function. Change क्या होगा? It's final minus initial by change the value of x, that is x plus h minus x, and this h is very small, almost tends to 0, right? That's why it becomes limit s tends to 0, because the difference is very small. F of x plus h minus f of x by h. यहाँ इसको हम, आपको याद हो तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोलते थे. कहां से आया? दिस इज बेसिकली डेल वाई बाय डेल एक्स. तो हम यहां से अप्रोच कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे आया. राइट हैंड डेरिवेटिव केस में हमें राइट हैंड साइड से अप्रोच करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव केस में हम लेफ्ट हैंड साइड से. इफ बोथ द थिंग्स आर इक्वल, इन दैट केस वी विल से यस द फंक्शन इज differentiable at that point. Now let's start with the question part. Let's start with question number 1. What are the regions of the continuity given the following? एक आपको function दिया हुआ है and we need to check at what points the function is continuous or not. तो आप देखो function break कहां पे हो रहा है, at 1 and at 2, means आपको एक बार x equals to 1 पे देखना पड़ेगा and one time x equals to 2 पे. So now let's start with x equals to 1. For that we need to check left hand limit and right hand limit, right? And then equals to f of a. In that case we'll say the function is continuous.
So left hand limit, that is limit x tends to 1 minus. 1 minus means 1 से slightly छोटा. तो x less than 1 होगा. In that case, function is f of x is x square. So it's x square. In case of left hand limit, we need to put x equals to a minus. Here it's x equals to 1 minus. So it's limit h tends to 0, 1 minus h square. Now let's substitute h equals to 0. So it's 1 minus 0 square, which is 1. Similarly, right hand limit, which is limit x tends to 1 plus of x square. In that case, 1 plus means 1 is slightly greater, which is x cube. So it's limit s tends to 0, 1 plus h cube. S tends to 0 means again it's 1. It means left hand limit पे तो limit exist कर रही है. And f of a क्या होगा? That is f of 1. Equal to case वाला बच्चों, second case में that is 1 cube, which is 1. Means all are 1. It means yes, the function is continuous at x equals to 1. Similarly, we can check for x equals to 2. Also, we can check for x equals to 2. How? Again, left hand limit. Limit x tends to 2 minus. It means 2 से छोटा, that is x cube. For that, 2 minus h cube. Again, a minus h in case of left hand limit, a plus h in case of right hand limit. Again, limit s tends to 0. If we substitute 0, 2 minus 0 is 2 cube, which is 8. Similarly, right hand limit, that is limit x tends to 2 plus. In that case, 4x. 2 से greater, बोला गया x greater than 2. In that case, we need to use 4x. So it's 4x. That is 4, 2 plus h. h 0, 4 to 8. Again, both are equal. Same f of 2 की value भी 8 आएगी. आप check करेंगे. In that case, yes, the function is also continuous at x equal to 2. It means 1 and 2 पे break हो रखा था. Apart from that, algebraic function always continuous होते हैं. We can say that yes, the function is continuous on entire R. पूरे R पे continuous. So this is all about question number 1. Now let's move to question number 2. Question number 2. Find the value of k. Find the value of k so that the function defined below is continuous at x equals to 0, where f of x is given by this. F of x आपको students given है. So in that case also we need to find limit. When limit of function f of x is equals to f of a, in that case we'll say function is continuous. And left hand limit and right hand limit, if both are equal, in that case we directly write limit x tends to a. So now let's start with limit x tends to 0, 1 minus cos 4x by 8x square. Let's find this limit part. लेफ्ट हैंड लिमिट में भी सेम फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट में भी सेम फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई हमने डायरेक्टली इसको कंसीडर कर लिया. सो 1 माइनस 4x cos 4x by 8x स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों इसके लिए? फॉर दैट आपको 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला आना चाहिए. 1 माइनस cos 2 थीटा विच इज 2 sin स्क्वायर थीटा. तो आपको वही यूज करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो 1 माइनस cos 4x इज 2 into sin square 2x. 2 थीटा का हाफ हो जाता था. Here angle is 4x, so इसका हाफ it's 2x by 8x square. That's cancel. It's limit x tends to 0, sin square 2x by 4x square. इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं? Limit x tends to 0, sin 2x. 4x square is actually 2x square. So we can write like this: sin 2x by 2x, limit x tends to 0, sin x by x is 1. When angle and the denominator part is same and both are approaching to 0, then it is 1. So it's 1 square, which is 1. So this is 1. Okay, now f of a means f of 0. F of 0 is what? K. F of 0 equals to k. It means yes, definitely k is equals to 1. So we can say that yes, k equals to 1. This is all about question number 2. Okay, now let's move to our question number 3.
क्वेश्चन नंबर 3, a function is f of x defined by this. आपको चेक करना है whether the function is differentiable at x equal to 2 or not. x equal to 2 पे given function differentiable है या नहीं, आपको ये चेक करना है. So for that लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, बट इसका एक शॉर्टकट होता है बच्चों. देखो फंक्शन किस पे ब्रेक कर रहा है, एट एक्स इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की नीड नहीं है, एक ही पॉइंट पे हो रहा है. आप लेस देन 2 पे जो फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल दो. 1 प्लस एक्स, शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का 1, तो इट्स 1. आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एज 1. सिमिलरली the right hand derivative निकालना है. right hand derivative means differentiation of 2 plus right hand derivative 2 से greater, right hand side से अप्रोच कर रहे हैं, 2 से greater, that is 5 minus x. तो differentiation of 5 is what, 0 and x का it's minus 1. ये डायरेक्टली शॉर्टकट है. इन दैट केस हमने देखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है, इट्स 1, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है, इट्स -1. क्या दोनों इक्वल है, नो. सो वी विल से f of x is not differentiable at x equals to 2. अदरवाइज आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता एंड अगेन राइट हैंड डेरिवेटिव भी आपको फाइंड करना पड़ता, उसमें थोड़ा सा टाइम जाता, बट यस ये शॉर्टकट है, आपको शॉर्टकट की ज्यादा नीड है. तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. Okay, now let's move to question number 4. Question number 4, very important question, थोड़ा different question है. If f is a real value differentiable function satisfying f of x minus f of y, x minus y का whole square, and f of 0 is 0, then we need to find f of 1. Okay, अब ये मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन बताया था. किसी फंक्शन का अगर आपको डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकालना है तो वो क्या होता है, अभी आपने देखा था f dash of x is f of x plus h minus f of x by h limit s tends to 0. ये अभी हमने देखा था, तो सेम इसमें अप्लाई करते हैं. बट यहाँ पे एक गिवन है थिंग, दैट इज मॉडुलस ऑफ f of x minus f of y is लेस देन इक्वल टू x minus y to whole square. हम यहाँ पे बोथ साइड मॉडुलस लगा देते हैं स्टूडेंट, दिस ऑल्सो मॉडुलस लगा दिया. सो इट इज लाइक लिमिट h टेंड्स टू 0 mod of x plus h minus this by h. अब f of x plus h minus f of x का मॉड क्या होगा, देखो आप सेम इसे यूज कर सकते हैं ना. इंस्टेड ऑफ x इट्स x plus h, इंस्टेड ऑफ y इट्स x, तो वी कैन यूज डायरेक्टली. इट मींस f of dash x should be less than, बिकॉज यहाँ पे लेस देन लगा है. इंस्टेड ऑफ दिस नाउ वी कैन यूज लेस देन साइन, सो इट बिकम्स x plus h minus x to whole square by divided by h. F dash x of mod is x cancel, h square by h, which is h. Further limit s tends to 0. It means f dash x का मॉडुलस is less than 0. किसी भी चीज का मॉडुलस लेस देन 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट. लेस देन इक्वल टू 0 तो पॉसिबल, मतलब लेस देन 0 नहीं हो सकता, मैक्सिमम 0 हो सकता है. इक्वल का साइन भी, इट मींस f dash x of x equals to 0. किसी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन 0, इट मींस दैट फंक्शन इज कांस्टेंट. मींस f of x क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन रहा होगा. कांस्टेंट मींस आप x की जगह कुछ भी एक वैल्यू डालो वो ऑलवेज फिक्स रहेगी. आपको गिवन f of 0 is 0, इट मींस अगर 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो डेफिनेटली कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट डेफिनेटली 0 रहा होगा. मींस जो फंक्शन है वो पक्का 0 है. अगर 0 पे 0 आ रहा है देन 1 पे भी कितनी वैल्यू देगा बच्चों, सेम वैल्यू देगा, विच इज
0 बिकॉज कांस्टेंट मींस एक फिक्स वैल्यू है इसकी. इज इट ओके? क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज आई सेड, अच्छा क्वेश्चन है. शाश्वत डेफिनेटली विल ट्राई कि नेक्स्ट सेशन से विल इंक्रीज द नंबर ऑफ सेशंस वीकली. ओके, विल श्योरली ट्राई. ओके, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बताया भी आपको इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करने की ट्राई करना. क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. Okay. If g of x is a function is differentiable, then the value of k plus m. Important question, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अभी मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते थे, राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, बट हमें टाइम बचाना है एग्जाम में. तो फॉर दैट आपको देखो किस फंक्शन पे चेक करना है. 3 पे चेक करनी है बेसिकली कंटिन्यूटी, बिकॉज 5 पे तो आप चेक नहीं कर सकते. लेस देन के लिए पता है, ग्रेटर के लिए आपको पता ही नहीं है. तो फॉर दैट लेट्स फोकस ऑन एट x इक्वल्स टू 3 डिफरेंशियबिलिटी. डिफरेंशियबिलिटी के लिए आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा एट x इक्वल टू 3, एंड एक बार राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा एट x इक्वल्स टू 3. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मींस लेस देन फंक्शन लेना पड़ेगा. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं मींस आपको x 3 माइनस मींस 3 से छोटा वाला फंक्शन व्हिच इज दिस. आपको करना है क्या, इसका डिफरेंशिएट कर दो. डिफरेंशियल करना आता ही हमको. तो इट्स मींस वी नीड टू डिफरेंशिएट k रूट ऑफ x प्लस 1. रूट x का 1/2 रूट x होता है, तो k तो एज इट इज रहेगा 1/2 रूट x प्लस 1. At x equals to 3 now students, it means we need to substitute the value of 3. So it's k 3 plus 1, which is 3 plus 1 is 4, 4 का root 2, so it's 2 to the 4, means this is our left hand derivative. Left hand derivative आ गया. Similarly, now let's find right hand derivative. Right hand derivative means x 3 plus के लिए जो अप्रोच कर रहा है, 3 प्लस 3 से ज्यादा के लिए, 3 से ज्यादा के लिए mx प्लस 2. तो आपको क्या करना है, इस बार mx प्लस 2 का डिफरेंशिएट कर दो. 2 का डिफरेंशिएट करोगे 0, mx का x का 1, इट्स m ओनली. तो राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया m. फंक्शन डिफरेंशिएबल है बोला, इट मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव. इन दैट केस विल गेट k by 4 इक्वल्स टू m, दैट इज k इक्वल्स टू 4m. बट इससे क्वेश्चन हुआ क्या, आपको तो k प्लस m चाहिए था, पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है. अब आपको पता है बच्चों, मैं लिख भी देता हूं नोट करके, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इट मींस यस इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट. अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस भी होगा. एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू. कॉन्टिन्यूअस है, इट डजंट मीन डिफरेंशिएबल, बट डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा. तो इट मींस ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा भाई. कॉन्टिन्यूअस होगा मींस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होंगी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट, कोई लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस स्लाइटली 3 से छोटा, विच इज k रूट x प्लस 1. आपको 3 माइनस h पुट करोगे, यू विल गेट, आप डायरेक्टली 3 पुट कर दो बिकॉज 3 माइनस h वही आएगा. बस शॉर्टकट पे अप्रोच करते हैं. डायरेक्ट लेट्स पुट 3 प्लस 1, इट्स 4, इट्स 2k. सिमिलरली राइट हैंड लिमिट, दैट इज 3 प्लस 3 से थोड़ा आगे, दैट इज mx प्लस 2. ऐसे 3 पुट किया, you will get 3m plus 2. Now left hand limit is equals to right hand limit because function continuous भी है, बोला नहीं है, it's okay, but differentiable it means yes continuous भी रहा होगा. So मेरे पास एक कंडीशन आ गई, 2k equals to 3m plus 2. Second, but आपके पास फर्स्ट इक्वेशन भी है, k equals to 4m. So now let's substitute k equals to 4m. If we write k equals to 4m, we will get 8m equals to 3m plus 2, from which we can conclude that 5m equals to 2, so m equals to 2 by 5. m equals to 2 by 5. आपसे पूछा था k plus m and k is what, 4m, that is 5m फाइंड करना है आपको, और m की वैल्यू तो पता है
It's m is what 2/5. 5 से 5 cancel 2. So 2 is our correct answer. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था. So this is all about differentiability. I just hope आपको समझ में आया हो. आपके 2-4 मिनट और लेता हूं. फर्दर मैं डिफरेंशिएबिलिटी को फंक्शन से थोड़ा सा शॉर्टकट बताने की ट्राई करता हूं यूजिंग ग्राफ. आप कैसे चेक कर सकते हैं कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट थिंग. जैसे मैंने भी आपको बताया कॉन्टिन्यूटी के लिए कि कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको ग्राफ के थ्रू आप चेक कर सकते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं. सिमिलरली स्टूडेंट्स, सपोज देयर इज अ फंक्शन लाइक दिस. आपको चेक करना है फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं. तो कहीं पर भी बच्चों अगर ग्राफ में शार्प पॉइंट्स आए हैं, जैसे देखो यहाँ पे शार्प पॉइंट आया है, जहां पे भी शार्प पॉइंट्स आएंगे वो फंक्शन कभी भी या वो ग्राफ कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा. अगर शार्प पॉइंट्स आते हैं लाइक मॉड एक्स का आपने देखा है, मॉड एक्स एक्स पे ना बच्चों डिफरेंशिएबल नहीं होता. कॉन्टिन्यूस तो है, फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा, लेकिन शार्प पॉइंट आ गया, एक शार्प पॉइंट आ गया. तो कभी भी शार्प पॉइंट्स आ जाएंगे, इन दैट केस उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता. ओके, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा बिकॉज शार्प पॉइंट्स पे बहुत सारे टेंजेंट्स बन सकते हैं. एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट ही पता लगता है ना बच्चों. डिफरेंशिएबिलिटी से आपने पढ़ा होगा एओडी में, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 12, राइट. वहां पे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़ा था आपने. तो इस पॉइंट पे तो बच्चों आप बहुत सारे टेंजेंट्स बना सकते हो. एक टेंजेंट ये हो गया, ऐसे ही बन सकता है. बट अगर कर्व है तो एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनता है, एक ही स्लोप. तो इनफाइनाइट तो पॉसिबल नहीं है. दैट्स व्हाई फंक्शन शार्प पॉइंट्स पे कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता. एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको लास्ट. आपको पता है साइन एक्स के बारे में. साइन एक्स का ग्राफ होता है स्टूडेंट्स समथिंग लाइक दिस. नाउ वी नीड टू चेक मॉडुलस ऑफ साइन एक्स. मॉडुलस मींस ऑलवेज पॉजिटिव. तो जो नेगेटिव वाली वैल्यू हो पॉजिटिव हो जाएंगे. फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव था, नीचे वाला भी ऊपर चला जाएगा. इट्स लाइक दिस. ये तो ऊपर है ही, अगेन नीचे वाला अगेन ऊपर. फंक्शन ऐसा हो गया. तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम कब आएगी, शार्प पॉइंट्स. जो ये शार्प पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा और सब जगह डिफरेंशिएबल होगा. तो आप ऐसे ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं बेटा. हाँ, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट 2-3 क्वेश्चंस कराए ना बेटा, तो उनका लेवल एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा आईपीएम का. जैसे अभी लास्ट 2-3 क्वेश्चंस कराए वैसा ही डेफिनेटली लेवल रहेगा. सिंपल वाले मैंने इनिशियली कराए, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस उतना सिंपल जनरली नहीं रहता. बट ऑब्वियस है हर एक एग्जाम में कुछ पार्ट इजी भी आता है तो उसके भी चांसेस है. बट हाँ, जो लास्ट 2-3 क्वेश्चंस कराए ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं. ये डेफिनेटली आईपीएम में आपसे पूछे जा सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज all about the lecture. Thank you. Have a great day. Enjoy and पढ़ाई अच्छे से करो. We'll see you in our next session. Thank you students. Thank you.